था तो पहले एक नजर हुण तक दियां हेडलाइंस ते। अमरीका के डाक सहूलत केंद्र विच गोलीबारी, 3 मुलाजमां दी मौत। वारदात तो बाद हमलावर ने खुद नूं मारी गोली। अगले महीने जमीनी सरहदां खोलेगा अमरीका। 19 महीनों बाद अमरीका, कैनेडा ते मैक्सीको लई खोलेगा बॉर्डर। सारे अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का कोविड टीकाकरण होना लाजमी। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने किया बड़ा ऐलान, 40,000 अफगान शरणार्थियों नूं शरण देवेगा कैनेडा। ब्रैम्पटन विखे बदमाशी नाल गड्डी अते समान लुटण के दोष हेठ 3 भारतीय मूल के नौजवान गिरफ्तार। पुलिस ने दोषियों कोलों लुटियां हुई गड्डियां भी कीतियां बरामद। ते हुण खबरां दा विस्तार। ते अमरीका के मैफिस विच डाक सहूलत केंद्र विच हुई गोलीबारी विच 3 मुलाजमां की मौत होने की खबर है। मरण वाले विच तीसरा व्यक्ति ही हमलावर से, जिसने वारदात तो बाद खुद नूं अपने आप नूं गोली मार ली। रिपोर्टां मुताबिक एक हफ्ते विच पश्चिमी टेनेसी विच जा नेड़े एक गोलीबारी की तीसरी वड्डी वारदात है। अगले महीने नवंबर विच अमरीका एक बार फिर अपनी जमीनी सरहदां गैर जरूरी यात्रावां लई खोलन जा रहा है, जो कोविड-19 कारण 19 महीने बंद रही। इससे खास है कि सारे अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का कोरोना खिलाफ टीकाकरण होया होना लाजमी होगा। अमरीका ने 19 महीनों की पाबंदी तो बाद पूरी तरह वैक्सीन लगवा चुके लोगों लिए अपने कैनेडा ते मैक्सीको बॉर्डर खोलने का फैसला किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट मुताबिक नवंबर तो यह बॉर्डर पूरी तरह वैक्सीन लगवा चुके ट्रैवलर्स लिए खोले जाएंगे। जिहड़े मुसाफर अपने पूरी तरह वैक्सीन लगन का सबूत देंगे, उन्होंने अपने परिवार कोल जां दोस्तां कोल जां फिर अमरीका विच खरीदारी करने की आग्या अगले महीने तो मिलेगी। इस तो पहला राष्ट्रपति जो बाइडन ने 7 समुद्रों पार देश विच आउण वाले सैलानियों लिए अजिही ही पाबंदी खत्म की थी। ते गल करदे कैनेडा दी, तां कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बुधवार नूं कहा कि तालिबान के फौजी कब्जे तो बाद उन्हां दा देश अफगानिस्तान तो 40,000 शरणार्थियों नूं स्वीकार करेगा। सितंबर विच कैनेडियन इमीग्रेशन मंत्री मार्को मेडिसिनो ने कहा सी कि देश 20,000 तो वध अफगाना, खास करके तालिबान द्वारा निशाना बनाए जा रहे कमजोर समूहां, जिन्हां विच औरतां, अधिकार कर्मचारी अते घट गिनती लोग शामिल ने, दा मुड़ वसेबा करेगा। ट्रूडो ने ट्वीट किया है कि कैनेडा 40,000 शरणार्थियों का स्वागत कर रहा है अते असीं दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी शरणार्थियों ਨੂੰ सुरक्षित ढंग नाल मुड़ वसेबे लई उन्हां दी सहायता वधाउण दी अपील कर रहे हैं। जिक्र खास है कि तालिबान अगस्त के अंत विच अफगानिस्तान की राजधानी काबुल विच दाखिल होया, जिस कारण पिछली अमरीकी समर्थित सरकार का पतन हो गया अते अंदोलन के डर तो अफगानिस्तान तो भज्जण की कोशिश करने वाले विदेशियों अते नागरिकों को वड्डे पद्धर ते बाहर कढिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बलों की वापसी के नाल वड्डे पद्धर ते निकासी कार्ज 31 अगस्त नूं पूरा होया सी। उधर यूरोपीय यूनियन ने भी अफगानिस्तान नूं 1 बिलियन यूरो की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। यह राशि तालिबान सरकार नूं ना देके उत्थे काम कर रही अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियों नूं सौंपी जाएगी। ये एजेंसियां अपने प्रोग्रामां जरिए अफगान लोगों की मदद करनगियां। भारतीय रुपए विच यह राशि 8699 करोड़ रुपए बनती है। इस सहायता राशि का ऐलान G20 के अफगान शिखर सम्मेलन तो पहला किया गया। यूरोपीय कमीशन के प्रधान उर्सुला वान डेर लेयन ने कहा है कि सानू अफगानिस्तान विच एक वड्डे मनुखी अते समाजिक आर्थिक पतन नूं रोकण लई हर संभव कोशिश करनी चाहिए है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान विच मनुखी अधिकारियों की रखिया समेत अफगान अधिकारियों नाल किसी भी तरह के संबंधां लई साडीआं शर्तां स्पष्ट ने। उन्होंने भी कहा कि पर तालिबान दीआं हरकतां दी कीमत अफगानां नूं नहीं चुकाउणी चाहिए। 11 अक्तूबर का दिन औरतों लिए खास है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन वालों औरतों नूं बराबर के हक अते जागरूक करने लई इंटरनेशनल डे ऑफ दी गर्ल चाइल्ड वजों 11 अक्तूबर का दिन तय किया गया। इस संबंध विच कैनेडा विच अनेक संस्थावां ने जो कि औरतों के हकों लिए काम कर रही हैं ते इन्हां विचों कुछ ने इस दिन की महत्ता बारे भी जानकारी साझी की। गर्ल्स दिस मंथ ऑफ अक्टूबर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी मंथ में 11 अक्टूबर को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल्स सेलिब्रेट किया जाता है। वो प्लान कनाडा ने बहुत अरसों से काम करके इस डे को एस्टैब्लिश किया था इन यूएन एंड इन कनाडा। सो ये बहुत प्राउड मोमेंट है, बिकॉज लड़कियां, जैसे आपको पता भी होगा, स्पेशली हमारे साउथ एशिया में लड़कियां बहुत कुछ में पीछे रह गई हैं।
तो हाउ टू रेज अवेयरनेस कि लड़कियों का भी पोटेंशियल है, वो भी लीडरशिप पोजीशन में जाती हैं। तो इस डे को हम लोग मोर कनेक्ट करने के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम गर्ल्स बिलोंग हियर प्रोग्राम बनाया काफी अरसों से। अगर हम चाहते हैं हमारे वर्ल्ड को, कम्युनिटी को, जो भी फ्यूचर हम इन्विजन करते हैं, हम उधर तक नहीं पहुंच सकते अगर हम आधी पॉपुलेशन हमारे वर्ल्ड की कंटिन्यूअली हम उनको हेल्ड बैक करें। सो अगर हम चाहते हैं कि जैसे एस्ट्राजेनेका के साथ मैंने काम किया था, मैंने शैडो किया था एस्ट्राजेनेका की कनाडा की प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो उनकी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट जो स्विट्जरलैंड में थी। जब मैंने उनको शैडो किया, वो उनका विजन है कि हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी को कैसे रेवोल्यूशनाइज करे, पर वो भी जानते हैं कि अगर हम चाहते हैं फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी या फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर को रेवोल्यूशनाइज करना, हम आधी पॉपुलेशन को नहीं लीव कर सकते बिहाइंड। सो दैट्स व्हाई इट्स रियली इंपॉर्टेंट जब हम बात करते हैं जेंडर एंड जेंडर इक्वालिटी के बारे कि हम कैसे इस प्रोग्राम में स्पार्क चेंज करें। हम लोग कैसे अपने बेटों को बड़ा कर रहे हैं, मैं अपने जो बेटे उनको कैसे सिखाऊं कि यू नो व्हाट, जैसे आप है वो भी लड़की भी इक्वल है। जब आपकी शादी होगी आप रोल शेयर करेंगे, काम शेयर करेंगे, तो ये जो डिस्कशन होता है वो घरों में पहले शुरू होता है। और जितनी हम बात फैलाएंगे वेदर सोशल मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया, जितनी ये जाती है बात घरों तक, इतना कॉन्वर्सेशन होता है। फिर पेरेंट्स को भी अवेयरनेस आती है कि क्यों नहीं मेरी बेटी, वो भी तो ਸਮਾਰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਅੱਜਕੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਰਾਏ ਹੈ। यूनिवर्सिटी ऑफ विनीपैग विच बतौर एसोसीएट प्रोफैसर तजर्बा लै रही जैकलिन रोमानो ने थैंक्स गिविंग डे दे पिछोकड़ ते इस दिन ते मौजूदा समय विच की मायने ने इस संबंधी विचार चर्चा की थी। And certainly with a lot of younger people. I mean, when you look at what Thanksgiving is celebrating and the sort of typical story of the symbols that were given, about early settlers having this, almost mythical dinner on this land, this first dinner to sort of celebrate the harvest. Basically, it shows a very non-indigenous view, I guess you could say, of what was happening. Mm-hmm. It makes the early sort of early colonialism look very peaceful and almost like indigenous people kind of voluntarily handed over the land and resources over to the new arrivals, which is generally quite a whitewashing of what history was actually about for indigenous people. Basically, right? I mean, early colonialism was about forced displacement. It was about violence. It was about, we're in the middle of a pandemic now. Indigenous people faced all kinds of disease that wiped out some say up to a third of the population, if not more at the time. So it was really quite a traumatic time in history where there was a lot of suffering, misery. I mean, nowadays we're talking more about in terms of genocide, in terms of how Indigenous people experience that history. So it's not something we're particularly, likely to be thankful for. Right. Well, I mean, I think there are a lot of Indigenous people that do this. Right, that sort of define themselves in terms of their culture, not just in opposition to colonial Canada. Right, Indigenous culture, although there's certainly many different ones across Canada, but many of them would share basic principles like this idea of relationships with all my relations across the land. Now that would include the soil, the rocks, the land, the trees. Right, everything in the ecosystem that we have as our relations, and that we exist because of our relationship. So the gratitude for everything that the earth has given us to survive for that year, gratitude for having those that we love around us, gratitude really, and renewal, I guess, of thanks again for a new cycle to be starting again. So those are sort of traditional Indigenous values that would be born, in and around a time like this, prior to the arrival of the Europeans. ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਤੋਂ ਮੇਅਰ ਬਰਾਉਨੀ ਕ੍ਰੋਮਰੀ ਵੱਲੋਂ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਡੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵੀ 167% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। On behalf of the City of Mississauga and the members of my council, I send my best wishes to all Mississaugan residents for a memorable and joyous Thanksgiving. During this Thanksgiving weekend,
Loved ones will join together and reflect on cherished memories while making new ones. Despite the many opportunities and blessings that come with living in Mississauga, some of our neighbors continue to face ongoing challenges. Over the last year, the Mississauga Food Bank has seen a 167% increase in people accessing the food bank for the very first time. This is why we need your help to raise $400,000 and 200,000 pounds of food by October 17th. So if you can, please help us set a table for our neighbors by making a financial donation of any amount you can, or by donating non-perishable food items to the Mississauga Food Bank. For every $1 donated to the food bank is able to provide 2 fresh meals to those in need. There is no shortage of compassion in Mississauga. We are a city that cares for our people and want to do more to give back. And only by working together will we help end hunger in our city. Have a safe and happy Thanksgiving, Mississauga, and thank you. बेशक सरकार ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੰਬਲ-ਪੂਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੈਥ ਪੋਟਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। We'd like to see one centralized proof of vaccine for all Canadians that they can use domestically and when they travel internationally. We have been talking to the provinces and really are encouraged that the provinces are willing to come together to work with the federal government. The election kind of got in our way a little bit, so I'm hoping that it's full steam ahead from here on out. They're still a little soft. There's a lot of hesitancy around traveling across the border because people are still a little uncertain about, what does that mean to be vaccinated? What does that mean to have testing back and forth across the border going each way? What happens if I go on vacation and test positive? Even though I'm fully vaccinated, how do I get back? There's still a lot of missing clarity for travelers, and so there's a little bit of lack of confidence still. And so we're just not seeing the numbers just yet. We're hoping to see those numbers increase once we do have a national proof of vaccine, and we can provide a little bit more clarity and a little more comfort to Canadians as they look to make their plans, as well as international travelers when they want to come to Canada. Well, I think that every country has to look at, with their own processes and procedures. The U.S. is certainly also encouraging, that the vaccine is really the way out of this. It's a way for us to, as global citizens, live with COVID among us. So, I think that it is a good message to say we're ready to see those international visitors come back. And certainly, I know that there are a lot of Canadians that are looking for that opportunity to go south, whether it's to reunite with family and friends, or to visit, a second residence that they have in the States. Well, first of all, they should check with with Canada, the Canadian government website, to make sure that they understand exactly what they need to do to come back to Canada. They need to check with the country that they're going to make sure that they have all of the paperwork and any testing requirements done before they go within the proper timelines that they're going. And the one thing that's going to be continue to be challenging is those family vacations, because right now the Canadian government has not really been very clear about children under 12 who are not vaccinated, and how they can, go on vacation and come back and, reintegrate back into their activities, whether it's school or extracurricular. ਮਲੇਰੀਆ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮੈਰੀ ਹੈਮਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਨ ਖਰੀਦਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। As some of you may know, I started my career as a malaria researcher, and I longed for the day that we would have an effective vaccine against this ancient
and terrible disease. And today is that day, an historic day. Today, WHO is recommending the broad use of the world's first malaria vaccine. Yeah, well, David, you've probably heard that it's historic, and it really is a historic moment. We've been searching for a malaria vaccine for over 60 years. It's been very elusive, very difficult to find a malaria vaccine. And now for the first time, we have one that can be delivered, that can be given to children, that can reach them in high coverage. So it's an exciting moment in science, but more importantly, it's a very important moment in child health. It is a very tragic disease. The onset of symptoms is just a fever. You know, if you're a parent, your child has probably had a number of fevers, but it rapidly progresses, and often it progresses so quickly that parents don't have a chance to intervene. So first, child is a little bit sick. Very quickly, it could go to shaking chills, deteriorate into convulsions. The child becomes very pale as their blood cells are burst by the parasite itself. And then, as you know, your red blood cells carry oxygen to your vital organs, so they start breathing very heavily as their little bodies try to get the blood cells to their vital organs, deliver oxygen. And then they can go quickly into delirium and sadly coma and death. And this happens in a matter of hours. Average time from first fever to death is 24 to 48 hours. And this is why prevention is so critically important. It will be very useful. So I think people don't realize that malaria remains a major killer of children in the world. There are over 200 million cases of malaria each year and 400,000 deaths. And the vast majority of those are in Africa, and the majority of cases and deaths are in African children. And so if you can imagine a vaccine that reduces all malaria by 40%, like this one does over a 4-year period, and then substantially reduces life-threatening severe malaria, this can make major impact. Well, I think there is a lot of discussion about this. I think we have to be very clear that a malaria parasite is a much more complex organism than a virus. The malaria parasite has 5,000 genes. It has life cycles that change in the human, and it has a life cycle period in the mosquito. So very complex. I think what you're getting at is the commitment and the funding, and that's very important. But this was a difficult vaccine to make, and this is potentially why we have the efficacy that we do for this vaccine, because of the complexity of the parasite itself. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। We decided it was the right thing to do, to suspend the right of practice of nurses who are not adequately protected. That's over 5% of the workforce is not vaccinated. That's pretty outrageous. Where I work, there's a handful, I would say a handful of nurses that aren't vaccinated. I think it's less than 5. Now, are we going to miss those nurses when they get suspended? Yes, but I don't think it will be as bad as people seem to think it will be. It is a systemic problem of a long-standing issue in the entire healthcare sector. It's just really come to a head over the last 20 months, and especially now with the vaccine. The vast majority of nurses are immunized, and they absolutely understand and see that the vaccine is safe and effective.
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਰੌਬਰੀ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 3 ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿਲੀਅਮ ਪਾਵਰ ਕੇ ਅਤੇ ਐਲਬਨ ਮਾਈਕਲ ਡਰਾਈਵ ਵਿਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ। ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਰਨ, ਦਵਿੰਦਰ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੌਥਾ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਬੀਤੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ NRI ਵਰਕਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਲੋਵਿਸ ਫ੍ਰਿਸਟੋ ਵਿਖੇ ਭਰਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਸਤਵਿੰਦਰ ਖੋਤਰਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਛੜੀਕਾ ਟਾਈਮ TV ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।